Okay, good morning. Happy New Year. We'll start the first session for this RTIT subject. So, RTIT, full form of this is recent trends in integrated technology. So, there are four technologies included in this. Okay, so this one is your first technology or first lab in which we are going to learn about additive manufacturing and reverse engineering. Then after three sessions, means three practical sessions, you will move to another labs, just like your friends are there in industry automation lab for PLC learning. Then another one is a robotics lab for all means related to robots, robotic technology, and last one is our UAV, that is drone lab. Okay, so there will be three sessions for each, means three assignments will be there for each lab. So total 12 assignments will be there. Okay, so for that you will get a term work marks of 30. Okay, 30 marks for term work for completion in time. Okay, in time, that is to be considered. Okay, so after completion of each practical, you should complete that assignment so that it will be very much easier for you for completion of term work. So we will going to conduct the experiments and will complete in that time only. Okay, so that we will not have that extra time to use for that. Okay, then, secondly, 20 marks will be external Viva and practical. Okay, so 30 plus 20, 50, total 50 will be there for this particular subject. Okay, so do you have any idea regarding additive manufacturing? What will be this technology, additive manufacturing? From the name, can you can you just guess what will be this technology will be? Okay. Okay, I will make it easy. One is additive manufacturing, one is subtractive manufacturing. So from the name, you can guess that additive means addition of something, and subtractive means it will be minus. So manufacturing is anything which from the raw material we create a finished product. So that is called as a simple definition of a manufacturing. So you have to use some raw material or some means in this case bar is the raw material in this case, and after cutting using this you will get some profile. So for that you use a tool, you use a machine for it. Okay, and as per the required or desired shape, you will get the final product. Okay, so that is a manufacturing process. But this is a type of subtractive manufacturing. Why subtractive? Means the raw material is in this way, and by minusing the material or by cutting the material, you will get a finished product. Okay, so this is an example of subtractive manufacturing. क्या है? आ जाओ, क्या रोल नंबर है? 18 नहीं है मेरे पास, 21 से आगे 21. हाँ, D1 बैच आई थिंक रोबोटिक्स, robotics. Okay, so so here my cutting the material means there is a subtraction of the raw material and you will get a product. So this is the type of subtractive manufacturing. There are various type of subtractive manufacturing. If, for example, this is a turning. It is achieved from turning operations. Okay, it's by a turning CNC turning machine. Okay, so here in this case, raw material is in form of block, and by cutting over VMC, you will get some profile. Okay, so this is also a example of subtractive manufacturing. Then what is additive manufacturing? Addition of material. So what will be the method or
the technology used for additive manufacturing? Huh? 3D printing. So 3D printing is a best example of additive manufacturing in which we add the material. So raw material, suppose in this case, raw material is in the form of, suppose this is an additive or 3D printed part. Okay. So in this, the raw material is in the form of filament, and that filament is heated and extruded from a nozzle, and layer by layer it is created by addition of material. So there is no existing form or existing form like this, a block is there, and then you cut it and subtract it from this and you will get a profile. But in this case, what is exact opposite? You are adding the material layer by layer to achieve some profile of an object, and you will get a finished product out of it. So this is called as an additive manufacturing. Okay. So uh, where it starts from? So history of this technology starts from 1980. Okay. So in the period of 1980 to 83, 84, that is the research done by scientist name as a Charles. Okay, so he started an technology by use of CAD data. CAD data is a computer aided design or drafting. Okay, so that data by using a software of means you are designing a model without using the graphical tools we use for engineering graphics. Okay, so in that you use a computer, so it is called as computer aided design. Okay, so designing is done by use of computer. So that's why it's called as CAD. Then CAM is what is CAM then? Computer aided manufacturing. So in that you are using computer for manufacturing. For example, if you are creating a CNC program, you are using a computer and create an output will be your simulation, or output will be the part program of that. Okay, so that is an example of CAM. Then CAE, what is CAE? Computer aided engineering. So in that analysis part is carried out. So analysis part is a broad perspective in that. So in that analysis, you can analyze a structural entity, you can analyze a thermal entity, you can analyze sound. So it is comes under acoustic analysis. You can analyze a fluid. So it comes under computational fluid dynamics. So depending upon the what conditions are there and what type of analysis you are going to use, that comes under CA. Okay, so there are different means it's a vast module in that you can consider CE. Okay, so coming back to when this started, 3D printing started. So first, this technology is named as a rapid prototyping. So technical word used for 3D printing is additive manufacturing right now. But in that decade, it is named as a rapid prototyping. Rapid means fast, okay, and prototyping means the application of to create a prototype. Prototype means it is not an actual working model. It might be a replica. It might be a partial. For example, in Auto Expo, cars are means new design of cars are introduced in public to showcase the design of that, but it is not in working condition or partially working condition. So that is called as an prototype. It is not an actual manufacturing product, so that will be manufactured. Okay, even some partial case also, pilot products are also there. For example, Mahindra B6 car, so it is in the beta version. Beta version means it is not an actual manufacturing. There might be a changes in the final manufactured and delivered car to the customer. Okay, so that is comes under prototype only. Okay, so this is called as prototype. Then what is rapid prototyping? Without using any die for creating a product. Okay, rapidly, as compared. Suppose you want to manufacture any, suppose this type of part you have to manufacture. Okay, so you required a die for this for casting purpose. Okay, so die is required for this, and then you required a core for this hole. Okay, to creating this cavity,
you require a core also. Then you will pour the metal or polymer, whichever you are using for creating that particular product. So for that purpose, you required a mold and a core to create that cavity. So for that, you have to design the die for that, to design the core for that. It requires much more time. Okay, for the initial stage, when then after completion of your die and core, you can manufacture rapidly. Okay, that is the thing. But why it is used as a rapid? Because it doesn't require any core or die. You have to just use the CAD data and you have to make the part out of it. Okay, so that's why it is called as an rapid prototyping. So the first invention he made is not an FDM method. He invented first method as a SLA, that is stereolithography apparatus, in which the material is in the form of liquid. Okay, liquid resin or photoresin is there. And by use of CAD data, then that data is converted into X, Y, and Z coordinates for the movement of the head. So in that head, laser is fitted in that case. So to solidify the liquid resin, to solidify the liquid resin. So right now the three printers we have that works over that principle, that is SLA. So that research goes on through a decade and it is used for a research purpose and creating a prototype. Then actual commercial market comes up in the picture in 1999 by company name as a Stratasys. So Stratasys comes and they created a commercial printer for a companies as a solution for a rapid prototype. Okay, for creating a robot. So they introduced first FDM process. Okay, so there are number of process in 3D printing. There is not a single method of 3D printing. Depending upon the material, depending upon the properties of material, depending upon the applications, the methods changes. Okay, so for this, the FDM method is used, in which the material is in the form of filament. Okay, and it is heated through the extruder, and then it is through nozzle, it is deposited layer by layer, and the product is created. Okay, so that is a fuse deposition modeling, in which you are fusing the material and then depositing and create a modeling. So FDM. So this machine is introduced by Stratasys, which is based in Israel, Rehoboth city. Okay, that is a provision of that. So uh, they make a solution for the companies to create a rapid prototypes before creating the dies and your products. Okay, so they comes into picture for prototyping purpose. Then another method comes, that is LOM. LOM means a laminated object manufacturing, in which the material is in the form of sheets. Okay, thin sheets are there and filament sheets, and then laser is used to cut that particular sheets as per your design. So layer by layer cross section is given to the machine, and it will create in that way, or it will cut that sheets, and then stitching by each layer with each other, you will get a product. Okay, in that it is in polymer or resin, and even in metals also. Okay, so they come with the metals. Okay, then after powder technology comes into picture, that EOS company has started manufacturing a powder based technology, in which again the laser is used for polymer also and for metal also. Okay, so first metal comes with LOM, okay, laminate. But the disadvantage of that LOM is that there is a wastage of material while cutting the sheet. There is a wastage of material, and that is not a main objective of this technology. The main advantage of this technology is that there is no any wastage of material. So that is the first case for that. So this LOM technology is now absolute. It is not exist right now. It's around the 2006
2006 this manufacturing uh, is absolute. Okay, for the companies, various companies discontinued that models, and they come with another solution, that is SLM, selective laser melting. Okay, or DMLS we can say. So in that, laser is used same, but the material now in the form of powder particles. Okay, for polymer also and for metal also. The difference in both the method is that one is selective laser sintering. So the powder is sintered because uh, polymer material doesn't require melting. It can be sintered and can be stitched. Okay, easily layer by layer to create an object. So it is called as selective laser sintering for polymer. And for metal, it is called as selective laser melting. You require the melting, otherwise it will not get homogenized, and you will not. There will be no stitching of the layers. Okay, so that's why the laser intensity is different. All the construction of machine is same. Only difference is that the laser used in metals are having high wattage. Okay. For example, 100 watt of laser is used in case of polymer, and in case of SLM, it's started from 400 watt to 1 kilowatt. Then multiple. Right now, they using 3, 4 lasers in a single machine to create a more homogenized and faster way of products. Okay. Still in 2010, this manufacturing is called as rapid prototyping, because why it is prototyping? Because there are three type of manufacturing. One is job production, second one is batch production, third one is a mass production. So this can be used for only first case, that is job production. Job production means what? Only for a single purpose use. That machine is used for a single application, or there might be sorry, that might be a change. Okay, in the design continuously. Okay, it should not match as it is. Batch production in match means one product can be manufactured in batches, 50 batch, 100 batch, 1000 batch, or 3 month period, 6 month period. This product is manufactured. That is called as a batch production. And third one is mass production, that is runs over year and year. Okay, means 24 by 7 it start manufacturing. For example, your screws, bolts, casing, or that product which is manufactured regularly, so that comes under mass production. So the disadvantage or limitation of this technology is that the bed size of the machines are smaller. Bed size of the machines are smaller. So that's why this is only used for a special case of product designing, rapid prototyping purpose. So the its reach is around the prototyping only. But when after 2010, the bed of size of the machine increases. So from first it is available in 125 by 125, or max to max 250 mm. That is the maximum bed size for a metal printers. Okay. Then after right now, it is goes around 1100 to 600 mm. Means 1100 x axis, 600 y, and z is around 300 to 400 mm. So you can manufacture in multiple batches. Okay, means suppose this type of product is there, and you have to manufacture that. You can create an array, means one product over another product, one product over another. So you can make a batch of 1000, 2000 in a single go, and you can print that, and after post processing you will get that part, okay, out of it. So the name changes from rapid prototyping to what? Additive manufacturing, because it is these products are directly used for the applications. Okay, so that's why the name changes from prototyping to manufacturing. Okay, so most of the aerospace parts or aeroplane parts are made from additive manufacturing. Implants are made from additive manufacturing. Metals in polymer case also, most of the parts of aeroplanes are used by additive, because their application is main lighter weight parts.
and you can almost get 60% lighter as compared to the another manufacturing technology. Means suppose casting is there, the casting weight of this part will be much more higher because it is totally filled. The volume is filled in case of casting. But in case of 3D printing, what happened? You get a means a various pattern in this, and it is not fully filled. Okay, but with the same strength or even more strength as compared to the solid one. Okay, so that's why you will get a lighter weight parts in case of 3D printing. So that is the major advantage of this technology. So it is used for batch production, and so that's why the additive name changes to additive manufacturing. So this is the history of this. So in the process of joining the materials to make the objects from three-dimensional data, okay, usually layer by layer, it is called as an additive manufacturing, and by common name, you name it as a 3D printing because it creates a three-dimensional model. Okay, then manufacturing components with virtually no geometric limitations or tools. It doesn't require any tools. Suppose for this, you have to manufacture by casting. You require die, you require core. After that, also after casting, you have to make the holes in this. Okay, post machining will be there, boring will be there. For that, you require different machines. Okay, for different machine you require different tools. Suppose this is of a diameter of 30 mm, this is diameter of 20 mm, so you require that number of tools. So this constraint are not there in case of additive manufacturing. You have to just use single machine. If main condition is that your job size should not exceed the bed size. That is the limitation. Okay, but you know it that the components and parts which is having a bed size of 600, it will not exceed. Okay, so there is no consider of any tools. Okay, then the design for manufacturing to manufacturing for design. So what it means, before 3D printing, you have to design in that way, should it will be manufactured. यानी ऐसा बनाना पड़ता था कि वो मैन्युफैक्चर हो सके, वो इस हिसाब से डिजाइन करना पड़ता. बट राइट नाउ यू कैन डिजाइन एनीथिंग, यू विल गेट द प्रोडक्ट. यानी कि सपोज एक वॉल्व है, तो वो वॉल में पहले कैसे जो होल्स रहते थे, जो पोर्ट्स रहते थे, वो डायरेक्टली straight. There is no only linear will be there. But right now, the wall manufactured by 3D printing, you can get any shape of ports in your products so that you can easily manufacture. यानी कि सब ड्रिल मारना होगा तो सीधा ही मारना पड़ेगा वो केस में. ऐसे टेढ़े मेढ़े ऐसे वेंट्स वाले आप नहीं बना सकते. इवन कास्टिंग में भी आप बनाना चाहोगे तो फिर अंदर से वो आपको कोर फिट ही नहीं करने आएगा वैसे जो क्रिएट करना है. बट इन दिस केस यू कैन हैव योर डिजाइन इन दैट वे एंड इट विल क्रिएट दैट कॉम्प्लेक्स शेप्स. जैसे जैसे कि अभी देखो ऐसा कॉम्प्लेक्स शेप बनाना होगा सिंपल टेक्नोलॉजी से तो नहीं बनेगा, पर ये इससे आपका इजीली बन सकता है. ओके, तो जितना कॉम्प्लेक्स करना चाहोगे आप, यू कैन अचीव दैट कॉम्प्लेक्सिटी इन योर डिजाइन. सो सो दैट इज द मेजर एडवांटेज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी. अभी इसमें जो मैंने अलग अलग लेके आए हैं तो ये क्या क्या है ये बताता हूँ. तो दिस वन इज अ एफडीएम. ओके, जो जितने भी ये दिख रहे हैं ये एफडीएम वाले हैं. सो दिस सो ओनली डिफरेंस इज दैट मटेरियल इज डिफरेंट. so this is of ABS material. ABS material यानी कि जो एक्रेडिल बुटेड स्टीरिन उसका फुल फॉर्म है, बट इट हैज अ मच मोर स्ट्रेंथ. पॉलीमर में जो स्ट्रेंथ वाला मटेरियल रहता है वो ABS मटेरियल रहता है. जो अभी ये भी बना है, जो गुड क्वालिटी
पॉलीमर है, दैट इज एबीएस मटेरियल। ओके, तो इसमें भी बहुत सारे एडिशन रहते हैं, उसमें भी अलग अलग मटेरियल्स आप यूज कर सकते हो। सो दिस इज ऑफ पीएलए मटेरियल, पॉलिलैक्टिक एसिड। तो इट्स अ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। ओके, उसके बाद ये भी एएसए मटेरियल है। ओके, तो ये सभी एफडीएम टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं। तो इसमें देखो लेयर्स थोड़े आपको दिखाई देंगे। ओके, इट इज नॉट फिनिश, तो पोस्ट प्रोसेसिंग करके भी कर सकते हैं बफिंग वगैरह ऑपरेशन। यू कैन अचीव अ स्मूथ सरफेस फिनिश ऑल्सो। ओके, देन दिस इज अनदर 3D प्रिंट। अब इसमें कुछ लेयर भी कुछ भी नहीं दिखेगा और ट्रांसपेरेंट भी है। दिस इज ऑल्सो एन 3D प्रिंटिंग पार्ट, 3D printed part. So it is made by another method, that is polyjet technology. Polyjet technology, जिसमें कि multiple jets are there and the material is in the form of liquid. Okay, and droplet by droplet this material is deposited and through UV light it is cured. Okay, solidification जो होती है वो UV लाइट से होती जाती है। अब इसमें अलग अलग मटेरियल्स है, जैसे कि अभी ट्रांसपेरेंट वाला है। दिस, उसके बाद ये सॉफ्टवेयर वाला मटेरियल है। यू कैन अचीव दिस फ्रॉम सॉफ्टवेयर ऑल्सो, और इन सिंगल go you can print. So this is a multi-material advantage. So we have that J850 printer, that is a polyjet printer. So from that you can achieve anything from it, or multicolors you can achieve from it. 5 lakh plus color combination you can achieve by combination of five different materials: black, white, then magenta, yellow, and cyan. So from that you can achieve any color. Okay, so you can achieve a softer one in a single print, in a single print. So there is no any assembly required in this case. But here, if you want any this type of parts, then it is not possible. In case of this, you have to have and separate printing, detail printing, and then you have to assemble that part. Then only you can achieve that one. And complexity you can't achieve or can't match with polygon. So every technology has its own benefits and limitations. So it is limitation is that this, as this technology is newer one, the cost of materials is higher side, because they have only one manufacturer of this technology, that is Stratasys. So you have to buy from them only. So that's why they get there is no any competition with this. So that's why they charging more. Okay, even you can achieve this type of textures in print. So this is a polyjet polyjet methods. Then different methods are there for metal printing also. That SLM technology. I don't have that part, but you can achieve a lighter parts also in case of for SLM methods. Okay. So what we are going to learn, we will come to that. So we are going to learn these steps. Okay. So first step is that the prerequisite for any 3D printing method you are going to use, that is a CAD model data. If you don't have any CAD model data, you can't go to the next stage. You can't print any model. If you don't have any CAD data, you will not have any tool path for your machine. You can't manufacture any part. So first we learn about how to create a CAD model. So we'll take some example over this, a simple product or simple part model, and we'll create it by using a CAD software. Okay. Then after that, second stage you see it is a .stl file. This is nothing but the extension is changed to this surface triangulation language file, that is stereolithography file. Another name is for this. The same technology which is invented. Okay, over that this file is named. Okay, so in this surface triangulation language file, it is the supportive of any slicing software. So you require two software in between before printing. Okay, there is no direct from CAD model, you can't directly print, because this machine can't understand the data which is taken from a CAD software. So it should be converted into tool path. So machine should know what is the X, what is the Y, what is the Z. Okay, so
this will be done by a slicing software. Okay, so we are using a slicing software for this, and this slicing software depends on the machine. Whichever machine you are going to use, you have to use that slicing software because that setting is included for that particular machine model. Okay. So if you are using a statistics printer, you have to use a GraphCAD software. If you are using any other means other printers, we have a Creality. So you have to use a Creality software. If you are using a Zotrax, then you have to use Z Suite for that. So if you are using another printer, so depending upon MakerBot printer, then you have to use a Cura software for that. So depending on फिरले काय सगळे फिरलेच सगळीकडे वरती जगह जगह नहीं ना कहाँ बैठा था? अरे बैठते क्या नीचे जमीन पे बैठने दो क्या बैठा इथे चार पाच आहेत फक्त. Huh? So slicing software, what it do, you have to just input which material you are going to use, which machine you are going to use, what will be the orientation. Orientation means you have to keep the model while printing in this way or this way or this way. This has to be user has to know this information, which and how to decide that which saves the material, which orientation saves the material. If I print this in this way, it will require the supports to create this model. If I print this way, it will create supports for this cavity. So you have to know to keep the model in this way so that the supports or the material required for manufacturing this part will be less. Okay. So depending on that, you have to decide the orientation. So this has to be given to this software. Okay, that is the slicing software. Then after that, slicing software, what it does, as per your giving the information, which material, which machine, what will be the layer thickness, okay, layer thickness of each layer, okay, that has to be input in the machine in the software, that is the slicing software. And then what it will, the final output will be, it will slice the model into this CAD data into number of layers. Okay, that also depends upon the machine. Okay, if the machine capability is of 100 micron, it will be sliced uh, up to 100 micron only. Okay, if the machine's capabilities are 14 micron, 10 micron, then it can go up to that only. Okay, so that also depends on machine. So after giving all that, the output will be the G code file from this slicing software, and the slicing software will give you a tool path for your machine so that the machine head can move in that particular direction only X, Y, Z to create that model. Okay. So this is the basic or functional principle. And then this file is given to the machine. Then you have to know how to operate the machine. Okay. Then you will get a final product after execution in the machine. Okay, so this is the functional principle any 3D printing method. Okay, so if you are using a suppose you are using a polyjet, then what will be there? The steps will be same up to this. Only the execution will be different. Okay, and the method of operation of that particular machine will be different in that case, and you will get a different output also. Outputs also different. So that it depends upon the capability of the machine. Okay. So there will be three sessions. The first session we will learn about CAD modeling. Okay. And then we will save that into a .scl file. Okay. Just similar to if you're changing that Word document to PDF. In that only, it the output from CATIA will be for .cat part. You have to just save as a STA in that case. And then after that same file we required for the second session for slicing purpose. So in that we will assign the material, the machine, the orientation, how much infillment you require, means how much volume you want to keep in this to create this model. And after that you have to slice that model, and then that file you have to give to the machine, and then machine will execute the
operation and you will get a final product. Okay, so that's the thing or the functional principle of additive manufacturing. So we'll start with the first session. So you have to use one software. So there are different softwares available in market. So this one is a CATIA V5. We have that license for one. That's why we are using it. Otherwise, you can use a Solid Edge, a SolidWorks, Fusion 360 area software, which supports CAD modeling, which supports CAD modeling. Okay, so you have to search for this particular symbol of globe, CATIA V5R16. Right click over this and open. Don't double click. Right click and open. We'll take a simple part to design. Okay, so somewhat blur, but we can read the dimensions. Okay, so take a picture of this so that you can refer the dimensions while completing the work. Take a picture and keep your mobile phone in front so that you can read the dimensions. I think you have this subject for this semester, engineering graphics. है क्या engineering graphics है ना? So in that also you have this final topic in that uh, isometric view and orthographic projection. So these two topics is the base of any CAD modeling. So that is the base you have to learn that two topics so that are the prerequisite for this. Okay. So this is an isometric view. ISO means one and in that one perspective of an observer, you have to able to see the three dimension with a true scale. So that is the definition of isometric view. Means length, height, and width should be as per the true scale. It should not be reduced or increased by the perspective of an observer. So here in this case, the width is 45. It should be seen by 45 only. 15 plus 15 plus 10, even 60 and 75. So this one should be in that way only. Height should be in that way only. Okay, so it should be a true scale. Okay, then only it is called as a isometric view. Okay, and the angle it is kept is a 120-degree angle. Why 120-degree angle? If you divide the three dimension, that is length, height, and width, by 360. Okay, so 360 divided by 3, you will get a 120-degree. So that's why it is kept in, always kept in 120-degree angle. Okay, so that it can be visible with a true scale. So this you have to recreate in the software. So I will coming back to this software. So CATIA is an software for CAD modeling, for surface designing, for mold designing, sheet metal designing. So it is vast applications of this in this case for mechanical as well as for infrastructure, for analysis, simulation, machining operation. For so this software is very vast. In that we are going to learn only one module that is mechanical design. In that also part design. Only we are going to learn for this particular three sessions part design or part modeling also we can name it. So go to start and click this mechanical design. In that you have to click over
part design. Now the interface will change in this way. Okay. Now the interface will change. Okay. So CATIA is a Dassault system software. Okay, it is manufactured by Dassault system. Even Pune, Hinjewadi has this plant of Dassault system. So basically, this is a France-based company. Okay, so they work for Mazak planes, for fighter planes, for creating, designing, or not. And then after they comes into this software development in which CATIA is one product of them. Then SolidWorks, Solid Edge. So these are the products of Dassault Systems. So the company name is Dassault Systems. In that, this one is a CATIA software. Okay. So this is the interface of part modeling. Okay. So sometimes students what they do is they cancel out this taskbar or in this way they move it from one place to other place. Depending upon the user, they change. So what to do? So you have to just right click over this radius CATIA and go down to this option customize. Right click, not left click. Cancel that window. Okay, cancel that window, close it, come back to the software, come back to the software. Okay, right click over the radius kit here. So you have to click over this customize, one window will appear, or in that you have to click over this tab, toolbar, toolbar tab, toolbar. Then these tabs are there, restore all the contents and restore all the positions. So what it will do, restore all the contents means all the contents which are cancelled out will be up again set to the default condition. Even in case of position also it will restore it. Okay. So you have to click over restore all contents, select OK and restore all the positions, select OK. So in this way all the taskbar which is cancelled out come back to its default position. Okay. Then after you have to close it. Another thing before starting is that you have to select the unit for your sketch drawing. Okay. So in this case, the unit is metric. Okay, metric unit, and basically two units are used in manufacturing. That is metric unit, and second one is the inch unit. So this depends upon the territories and areas of working. If you are working in an European countries, then the clients use a inch unit. Okay, so they use this inch unit. But in case of our case, Asia Pacific and these countries, they use this metric unit. Okay, so that's why in your engineering graphics also the syllabus, all the dimensions are in mm. Okay, if you are working for other country, of you suppose an European country, then you want to change the unit. Then how to do it? You have to go to this tool option, and in that tool option, in that you have to select one options. In that parameters and measure, from here you can change your units. You can change your unit. If you're working for a civil application, they uses feet for as an unit, then you can use that feet. So depending upon the use, you have to change the unit. So you have to go to tools. In that tools, you have to go to options command, option. In that this window will appear. In that various settings are there, from general settings and other settings for our your workbenches also. Okay, so just I want to show before starting, you have to know how to select the units. Okay, so these are the planes. Okay, these are the planes. Planes are nothing but it depends on this Cartesian coordinate system. Okay, x, y, and z. Okay, so this one is the x axis, this one is the y axis, and this is the z axis. So the plane lies between this one. Suppose this one, so it lies between x and y.
So this is called as an XY plane. If it lies between Z and X, sorry, Y and Z, it will be a YZ plane. If it is ZX, so why we require this? Because while drawing this, the perspective you are using this to draw, as per that perspective, you have to select the plane. Okay, if I'm drawing this in this way, suppose I will draw a 2D sketch of this shape in this way, the cursor is moving. If I want to draw this, then I want to use ZX plane. If I want to draw only this rectangle, then after I will draw another rectangle to create that shape. Okay, then you have to use XY plane. But the base method of base design is that you have to sketch your model in that way. It requires minimum sketches, minimum command. That is the better or best way of any design. Okay, so it will eventually it will reduce your time or save your time of creating that model, and also there is no any patches of your sketch or your model. After conversion, there may be problem if you're using bad design. Okay, so that should be considered. So here also, if you extend this, some of the PC doesn't have this. Okay, some setting is done by a student. Okay, so X, Y, Y, Z, and ZX. From here also you can select, and from here also you can select. Okay, so start. We will start with this problem. So I will using this ZX plane as a 2D sketch, and then I will use the volume to create it. Okay, so that this portion and this portion will be completed. Then after I will use this surface to create the undercut. Okay, similar to this undercut. This is called as undercut. Okay, so throughout undercut is there, and then after one extruded portion is over here. So for that, so total one, then two, three, and this four. Four sketches are required to complete this model. Okay, so we'll start with first selection of the plane. So left click for this ZX plane. Left click, single click for the ZX plane. ZX plane. Okay. You are in the wrong workbench. You have to go to start. Go to start. Go to mechanical design. In that part design, click it. Select OK. Now you can select that. Now you can select ZX plane. Okay. So uh, just know it. When you select any command or anything, it changes its color to brick red. It means that that option is active. Okay, it means that that option is active. So say after selecting this, you have to move from this 3D environment to a 2D environment to create the sketch. Okay, so for that you have to click over this and go to this option name as a sketch. A paper pencil type symbol is there. Click over that, then your interface will change. Interface will change into 2D environment. Okay, so this is called as a sketcher workbench. This is a sketcher workbench. So now again, some students, if the commands are not in proper, again you can right click and customize it if it is there. So right now I think all students have the proper. Okay, so I will just show you. Don't move this. Okay, so this is a profile taskbar in which various profiles are there, profile line, rectangle. In that also you can see number of different profiles, circles, arcs. Okay. So depending upon your sketch and profile, you have to select that appropriate commands from this profile taskbar. Okay. Then another taskbar you are going to use is a operation taskbar in which various operation you can perform trimming of lines, then mirroring in same symmetricity of uh, profile is there. You can mirror that. You can want to transfer it. Means it is called a transformation commands are there. So various operations commands
This is called as a operation taskbar. Then to give the dimension to your sketch, this is a constraint taskbar. From this, you can give the dimension to your sketch, as well as you can give the constraint. Suppose the parallelity, perpendicularity with the other profile, same center, okay, coincidence. So these properties you can give to your profile by using this constrained taskbar. Then another taskbar you are going to use. I'm showing only that taskbar which you are consistently use in your profile design. Okay. So view. View means zoom in, zoom out, rotating. So the these commands are related to the view of your object or profile. Okay. So these are the view taskbar. Then another one you required is this one. Okay, exit workbench. From exiting from this particular workbench 2D environment to 3D environment, you required that command. Okay. Again, I will restore this, only restoring the position. Okay, so we'll start with sketching. First, you look to how I sketch, and then after you will try it. Okay, just observe where my cursor is moving and how I am using it. So for this, I will start with this point. Okay, then in this way I will draw. Okay, I will complete. Okay, just I will copy the profile. Then after I will give the dimension to the particular profile I have drawn. Okay, so for this I'm using one command name as profile. Just single click over it, left click, okay. Then move your cursor to the origin. So here origin means what? The coordinates are 0, 0. Okay. Then you have to just left click without moving your mouse. Okay. Don't move your mouse. Otherwise, what will it will do while moving? It will create what this type of radius. Okay. So don't move while clicking the mouse. Okay. Only use left click. Now, when I click over the origin, it will start creating the line. Okay. When it is in white in color, it is non-linear. When it turns to blue color, it means that it's a straight line, it's a linear line. Okay. So I will start that profile. I'll just check. So I will randomly just click over here. Yes, I will. Okay. Okay. Left click. Just give the direction where you want to go. Again, stop moving your mouse. Again, a left click. Then towards upward direction, left click in this way, left click. So when I move towards the that starting point, it show me the reference. Okay, so then only I have to click left. Okay, then after this undercut is there. In this I will cover the undercut also. So one sketch will be saved in this. Means total three sketch will require. Okay, so in this way, starting from that, just observe that image in front of you and just copy the profile. Just try it. Randomly you have to draw. Okay, just it should be appropriate to that profile. Okay, there should be no any different lines. I think you are the interns for this. So you can utilize this lab after completion of their sessions. So these sessions are recorded. So you can use that recorded videos to practice. Okay. So I will upload this over YouTube. I will share you the channel to you. So just refer it and you can get the hands-on experience. Otherwise, it is very much difficult. Okay, without hands-on. Don't left.
press left click and move your mouse. Only if that happens, use Control Z. Use Control Z. Control Z, so it will move back to its last position. Again, Control Z up to the right position you want. Just move it. If you play some games over your keyboards and mouse without that mobile games, this will much be easier for you. अगर बचपन में खेला होगा काउंटर स्ट्राइक वगैरह तो ये बहुत इजी जाएगा तुम्हारा. नहीं तो ऐसा होगा ये कर रहे थे जिंदगी में पहली बार माउस यूज करेंगे. हैं? देखो गेम्स भी कभी कभी काम में आते हैं. ओके गुड. अब तू करना तुला भेटलंय तर. और अदर स्टूडेंट्स कैन यूज over here. One PC is here. Another PC you can use it. नहीं नहीं उस पे नहीं है. बाकी सब पे है. वो कॉर्नर वाला है. हाँ कॉर्नर वाला है. अरे किधर भी क्लिक कर रहे यार. कंट्रोल जेड करो. मैं यहाँ से तुम्हारा गाइड करता हूँ. कंट्रोल जेड हाँ बस अभी प्रोफाइल लाइन पे क्लिक करो. जाओ कमांड पे जाओ. ये देखो इधर देखो. ये इस पे जाओ क्लिक करो. हाँ यहाँ पे लेके आओ सेंटर पे. लेके आओ लेफ्ट क्लिक सिंगल क्लिक करो एक. अब मूव करो माउस ऊपर की तरफ. ऊपर की तरफ लेके जाओ. हाँ बस क्लिक करो एक. राइट की तरफ लेके जाओ. लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ. क्लिक करो. ऊपर की तरफ लेके जाओ. क्लिक करो. राइट की तरफ लेके जाओ. क्लिक करो. नीचे लेके आओ. पूरा नीचे लेके आओ. अरे अरे कंट्रोल जेड करो. हाँ फिर से क्लिक करो एक. नहीं नहीं सीधा रहेगा. हाँ नीचे लेके जाओ. नीचे 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 पूरा नीचे आन दो. जब तक ब्लू लाइन नहीं दिखेगी. और एक हाँ क्लिक करो. लेके जाओ. हाँ क्लिक करो एक. नहीं नहीं उतना नहीं छोटा. हाँ अरे अरे हाँ ऊपर थोड़ा. थोड़ा सा बस सीधा सीधा. बस इधर और लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ हाँ क्लिक करो. नीचे लेके जाओ. नीचे पूरी ब्लू लाइन. हाँ इधर राइट. और जहाँ पे फिर से दो सर्कल दिखेंगे आपको तब क्लिक करो. ओके हो गया. बन गया क्या. नाउ यू कैन ऑब्जर्व इट. माई स्केच इज डिफरेंट. हर स्केच इज डिफरेंट. सबका अलग अलग आएगा क्योंकि हमने सिर्फ क्या किया है. वी आर जस्ट कॉपीड द प्रोफाइल. नाउ वी हैव टू यूज द डायमेंशन टू मेक इट परफेक्ट. ओके एज पर योर प्रॉब्लम. ओके सो क्या है देखो डायमेंशन देखो. So this is 15, this is 50, this is 10, this is 45, this is 50. Okay. So we will use the same dimensions. Okay. So how to give the dimensions? So now just double click over this blue type box. This is called as a constraint. Double click, left double click. Why double click? So this command will be active till you again go back and click over that command. या एस्केप बटन जब तक नहीं दबाते आप तब तक ये कमांड चालू रहेगी. ओके तो ये क्या होगा कि हर बार आपको एक लाइन का डायमेंशन देके फिर से जाना पड़ेगा. ये टाइम अपना बचेगा इसलिए डबल क्लिक. ओके नाउ क्लिक ओवर दिस लाइन. लेफ्ट क्लिक. मूव योर माउस डाउनवर्ड. अगेन अ लेफ्ट क्लिक. देखो मैं कैसा कर रहा हूं. पहले लेफ्ट क्लिक करो इसको. फिर नीचे लेके जाओ. फिर लेफ्ट क्लिक करो. लेफ्ट क्लिक. नीचे लेके जाओ. लेफ्ट क्लिक. ये राइट साइड. ओके डोंट गिव डायमेंशन. और ये वाला छोटा वाला जो है इसको एक डायमेंशन दो. और इसको एक डायमेंशन. अभी जितने मैंने डायमेंशन दिए ना वैसे ही डायमेंशन देना है. एक्स्ट्रा डायमेंशन नहीं देना है. कंट्रोल जेड करो. जो पर्पल कलर आया है ना वो एस्केप करो. हाँ कंट्रोल जेड करो. और एक करो. एक और एक.
जब तक जाता नहीं, एस्केप करो, एस्केप बटन, एस्केप बटन, एस्केप बटन। कीबोर्ड में टॉप लेफ्ट कॉर्नर रहता, एस्केप बटन। ये कमांड पे फिर से क्लिक करो, ये कमांड पे एक बार क्लिक करो, कमांड पे फिर से एक बार क्लिक करो। हाँ क्लिक करो। हाँ बंद हो गया, आप कंट्रोल जेड करो, कंट्रोल जेड। अभी फिर से कमांड पे डबल क्लिक करके सिंगल बार क्लिक करना है, और जितने मैंने डायमेंशन दिए उतने ही देने हैं। अभी इसका मतलब समझाता हूँ आपको क्या है। कभी भी आपका जो ड्राइंग रहेगा, जो भी स्केच है, इट शुड बी नॉट बी ओवर डायमेंशन। उसको बोलते ओवर कंस्ट्रेंट। यानी कि अभी इसको समझ में आया ना, यहाँ पे ये इतना है, ये इतना है, ये इतना है, फिर से मैं इसको दूंगा तो वो ओवर कंस्ट्रेंट कर रहे हैं। ओके। इवन आप ग्राफिक्स में भी, जब भी पेपर पेंसिल पे भी आप ड्राइंग करते हो, तभी भी अगर एक साइड को लेंथ दी है ऐसे और ऊपर फिर से लेंथ दे रहे हो, इट इज रॉन्ग। ओके। इसलिए सॉफ्टवेयर में भी वैसे ही दिया है कंसेप्ट, सेम कंसेप्ट है। ओके। तो इसको बोलते हैं ओवर कंस्ट्रेनिंग योर प्रोफाइल। ओके। वेन, अभी देखो सपोज इन केस, या अभी जो अभी फिलहाल जो केस है, दैट इज प्रॉपरली कंस्ट्रेंट, यानी पूरा ग्रीन कलर में आपको प्रोफाइल दिख रहा है। अगर मैं इसको मूव करने का कोशिश करूं, इट विल नॉट मूव फ्रॉम इट, सो इट इज प्रॉपरली कंस्ट्रेंट, यानी इसको मूवमेंट नहीं होगी जगह से। ओके। अब देखो, मैं एक आधा डायमेंशन यहाँ का हटा देता हूँ, डिलीट, तभी ये व्हाइट कलर हो गई। ये देखो, ये मूव हो सकती है। इसको इसको बोलते हैं अंडर कंस्ट्रेंट। ओके। So your sketch should be not under constraint. Your sketch should be not over constraint. Your sketch should be properly constrained. ओके, ग्रीन ही रहना चाहिए। इवन आप ये ड्राइंग में भी ऑब्जर्व करो, यहाँ पे इसको इतना ही दे, देखो जैसे मैंने डायमेंशन दिए उतने ही डायमेंशन उसने भी दिए, देखो 15, 50, 10, 45, ये 15 यहाँ दिया है, और यहाँ पे 20, यहाँ बीच में दिया है, उन्होंने कोई डायमेंशन नहीं दिया। सो दे ऑल्सो फॉर, सो दिस इज द जेनरिक रूल। अभी ये डायमेंशन सबके अलग होंगे, मेरे अलग है, सबके सबके अलग है। ओके। तो आपको क्या करना है, जब ऐसा पूरा हो गया प्रॉपर, हाँ, कंट्रोल जेड करो, एस्केप बटन दबा के, और फिर से प्रॉपरली जितना मैं जो लाइन पे क्लिक किया है ना, वही लाइन पे क्लिक करो। जैसे कि ये लाइन, ये लाइन, ये वर्टिकल लाइन, ये एक लाइन, ये वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये एक लाइन। इमेज आपके सामने मैंने दिया है, उसके लिए दिया है, वो देखना है। ये तुम्हारा इजी का भी काम हो रहा है, यहाँ पे पढ़ाई हो जा रही। हाँ दो उसको, डायमेंशन पे क्लिक करो ना, ऑप्शन बंद है, ऑप्शन बंद है तुम्हारा, डबल क्लिक करो उसको। हाँ आ गए, साइड में लेके जाओ, बाहर लेके जाओ उसको, बाहर लेके जाओ। हाँ ले, क्लिक, क्लिक करो। हाँ, अभी ये जो इधर का है ना, ये लाइन को क्लिक करो, ये लाइन। ओ नहीं नहीं, ग्रीन लाइन, ग्रीन लाइन। हाँ क्लिक करो उसको, ग्रीन लाइन। हाँ, वो फिर से ऑप्शन चला गया, डबल क्लिक करो ना उसको। हाँ गया वो, साइड में लेके क्लिक करो। साइड में क्यों लेना है, क्योंकि हमें जब अल्टर करेंगे डायमेंशन तो इजी जाए, जूम इन जूम आउट करने की जरूरत नहीं। क्या कुठलं आती गरज नाही ना, खाली दिलंय ना तू, इथं दिलास पण तू, कारण हे रेफरन्स घेतलाय त्यांनी ह्याचा, त्याच्यामुळे त्याचा रेफरन्स घेतलाय त्यांनी। अच्छा, मग ते दोघे इक्वल, खालचं पण केलं ते वरचं एकच. हा असं आहे का? ते राहू दे आता, मग आता ह्याला देखो, पर्पल नहीं आना चाहिए। हो गया। अब अब देखो इधर, इसको चेंज कैसे करना है। नाउ हाउ टू चेंज द डायमेंशन और अल्टर द डायमेंशन।
Okay. Now you have to deactivate the first the command which you have used. Just deactivate that. Okay. Then come back to this starting from the smaller dimension. You have to change it. Smaller dimension से change करते जाना है. Smaller से बड़ा बड़ा. Okay. Ascending order. So this one is a smaller one. Okay. तो डबल क्लिक करना है नंबर पे. डबल क्लिक लेफ्ट क्लिक. कितना है देखो 15 है. So this is 15. Type it. Select OK. Then this one is 50, 50. Double click over it, 50. Then this one is 10. Select OK. This one is 45, I think so. This one is 15, 15. And this one is how much? 20. This one is 20. Okay. So this one, this completes your dimensioning. This one is remaining. How much it is? Uh, 5 mm. 5 है कि 6 है समझ में नहीं आ रहा. 5 ले लेंगे. We'll take this as a 5. Okay. So change this similar to start from smaller dimension. स्मॉलर डायमेंशन से करो बोला ना मैं इसलिए वो बिगड़ गया. कंट्रोल जेड करो. हाँ. अब छोटे छोटे डायमेंशन है ना पहला क्या करो ये 15 वाले करो फिर 10 वाला ये 10 वाला करो. हाँ उसको करो 10. ऊपर वाले 15 वाले करो ऊपर का उसको 15 करो. ओके करो. ये 45 कर दो वापस. 45 45 वो 20 करो 20 करो इधर 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 इसको 20 करो. इधर है देखो ये इसको 20 करो. हाँ, करो डबल 20. अब वो ये इसको 5 करो. ये देखो इसको 5 करो ये वाला. हाँ 5. अब इसको चेंज करो 50. गड़बड़ कर दिया. पर्पल दो दो तीन तीन कितने लेने वाले हो तुम. और एक रह गए. ओके. हाँ मल्टिपल झालेत ना तिथे. हे बंद करावं लागतं त्याशिवाय जात नाही. इथे 5 आहे. हे पण तिथं वरती एक आहे आणि इकडे ओके. अरे कंट्रोल झेड करायचं. कंट्रोल झेड करा आणि अजून एक अजून कर ना. कर सर्व गोष्टी. हा थांब. आता हे काय झालंय ह्याच्यामुळे आलेलं. ह्याला पहिला 5 करून घ्या. मग 20 कर. म्हणून ते एकमेकात खेळाले. हे किती 45 हे किती आहे. अरे एकसारखं घेतलंय तुम्ही. अवघड झालं. डिलीट करा. ही लाईन मला डिलीट करावं लागेल. कारण कसं आहे ही मॅच नाही झाली पाहिजे खालच्या ह्याने. कारण वेगवेगळे येते हे 10 आहे. अरे, हे पण बदलना पडेल.
नहीं नहीं, कंट्रोल जेड कर, कंट्रोल जेड, अब हो जाएगा। एस्केप, दम छोड़ो इसको, अब हो जाएंगे। झालं. ओके क्या? Now you have completed the sketch. Okay, you have given the proper dimension in this way. Now the second thing, you have to exit from this 2D environment, sketch environment. For existing this, you have to click over this option, upward arrow type option, exit workbench. Click over that. We will come back to that same environment, that is a part modeling environment. Okay. Now your profile is here. Now you have to check what is the width of your object. So width is how much? 45. 45. So instead of giving the 45, I will use half of this 22.5. Why? Because I want to keep my object in the center. Okay. Or make sure always you have to use this practice to make your object in the center. If I give 45, it will goes from center to this side or center to this side, depending upon which side you are going to extrude that part. Okay. And when I using to keep my profile in center, and from this 22.5 this side, 22 from other side, then you will achieve the same dimension, but your object will be at its center, means origin. So make sure always when you're modeling, you have to keep your model in the center. Okay. So for that, you have to use this command. Look here, pad. Just below that same command, sketch command, just below that, a pad command is there. Pad. Click over that pad command. As you click over this pad command, some default extrusion will show in this, that is 20 mm. So you have to change this dimension to 22.5, 22.5. Okay. Then check this box, mirror extend. Check this box, mirror extend. This one. So what it happening is there, profile will be in the center, 22.5 either side. ओके, दोनों साइड में 22.5 22.5 चला जाएगा, तो आपका बराबर 45 आपको मिल जाएगा. ओके. ना इसका मतलब क्या हो गया, वो प्लेन जो है बराबर सेंटर में रहेगा. इसका एक फायदा क्या है, देखो इसमें, ओके कर लो. सेंटर में रखने का फायदा देखो, ये जो रिप बनाऊंगा ना मैं जब, तो बराबर मुझे सेंटर फिर से प्लेन क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो दैट सेव माई टाइम ऑल्सो. ओके. अगर एक साइड को 45 दे देता तो फिर से मुझे प्लेन को शिफ्ट करना पड़ता. ओके. सो आई रिक्वायर्ड अ प्लेन, अनदर प्लेन टू क्रिएट इन द सेंटर. सो अभी कुछ करने की जरूरत नहीं. ओके. सो दैट इज द एडवांटेज. अब नेक्स्ट देखो, दो चीजें रह गए हमारे, दो स्केच. ये रिप रिप या इसको स्टिफनर बोलते. देन दिस वन. ओके. एक थ्रू आउट एक सेक्शन है 25 in the center and the width is 5. अभी क्या करना है देखो, इसको मूव करना है. अभी ये मूव कैसे करना है ये मैं बताता हूं, क्योंकि मुझे ये पीछे का सरफेस चाहिए, क्योंकि पीछे साइड है ना उसकी. ओके. सो हाउ टू मूव योर, सो यू हैव टू यूज व्यू ऑप्शंस ओवर हियर. अभी देखो यहाँ पे एक हैंड और ग्लोब जैसा कुछ तो ऑप्शन है, उससे आप इसको मूव कर सकते हो. उसके साइड का देखो ये है पैन, पैन से आप उसको मूवमेंट मूव कर सकते हो, वो रोटेट कर सकते हो ये केस से, और ये इससे आप मूव कर सकते हो. ये जूम इन जूम आउट होता है. ओके. अब ये और ये जो येलो कलर का जो है, दिस इज कॉल्ड एज फिट ऑल, मीन स्क्रीन में आपके बराबर वो ऑब्जेक्ट फिट हो जाएगा. ओके. उसके बाद यहाँ पे देखो ये व्यूज है, फ्रंट व्यू से देखना है, आइसोमेट्रिक व्यू से देखना है,
अभी देखो जैसे अपना प्रॉब्लम है वैसे ही व्यू में आ गया है वो, जैसे मैं आइसोमेट्रिक पे क्लिक करूंगा तो वैसा आ जाएगा। अगर मैं उसको फ्रंट व्यू से देखना चाहूंगा तो देखो ये फ्रंट व्यू। राइट, सो एज यू आर सिलेक्टिंग द व्यूज यू विल एबल टू सी योर ऑब्जेक्ट। अभी मुझे एजेस नहीं दिखाई दे रहे, एजेस चाहिए तो इस सिलेंडर जैसा ऑप्शन है उसमें पहले वाले सेकेंड वाले ऑप्शन को क्लिक करना है, शेडेड विथ एजेस, सो आई विल एबल टू सी द एजेस ऑल्सो। ओके, वो वाला करके लो, ये सिलेंडर वाले ऑप्शन में जाके सेकेंड वाला शेडिंग ले लो, शेडिंग विथ एजेस। ओके, अभी माउस के शॉर्टकट भी बताता हूँ, जो मैंने अभी कमांड आपको दिखा है वो ऑप्शंस में माउस से भी आप कर सकते हो। इफ यू वांट टू रोटेट योर ऑब्जेक्ट, स्क्रोल बटन एंड राइट क्लिक बटन दोनों प्रेस करके होल्ड करो और मूव करो माउस को, यू कैन रोटेट योर पार्ट। ओके, सेकंड थिंग, मूव करने के लिए सिर्फ स्क्रोल बटन से आप मूव कर सकते हो प्रेस करके। ओके, जूम इन जूम आउट देखो कैसा है, स्क्रोल बटन और राइट क्लिक बटन प्रेस करके, राइट क्लिक बटन सिर्फ छोड़ना है, स्क्रोल बटन प्रेस ही करके रखना है, यू कैन जूम इन जूम आउट, ये माउस से शॉर्टकट से। ओके, अब रोटेट करके ले लो प्रॉपरली, ये वाला साइड चाहिए मुझे, रोटेट करके लो, फिट करो पहले उसको ऐसा, फिट करने के बाद रोटेट करके ले लो। येलो कलर पे फिट है देखो, येलो कलर का ऑप्शन, फिट करके यू हैव टू रोटेट, तो रोटेट योर पार्ट। अभी ये बैक साइड के इस पे क्लिक करो, सरफेस पे घुमा लो उसको, पूरा घुमाओ, रोटेट, हाँ रोटेट 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 रोटेट, हाँ बस वो साइड दिखना चाहिए, पीछे का बैक, बैक दिखना चाहिए। ये बैक को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट दिस बैक साइड, बैक साइड को सिलेक्ट करना, कैंसिल करो, कंट्रोल जेड, बैक साइड को क्लिक करो, हाँ बस, रुको, सिलेक्ट किया बैक साइड को, ये सिलेक्ट करो इसको, किया क्या, काय झालं तुम्ही, अजून इथंच अडकले का, हा ते म्हणे आले, जवळ आहे जवळ आहे. तुम्ही सिलेक्टच नाही केलं ना, प्रोफाईल सिलेक्ट करायला, मेरा- अरे वेगळं एक second. हाँ झाले ना मेरे इससे, क्या किया है इसमें, ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है मुझे. ये बदलो ना रे, किती आहे, बदल आहे 50 हे कर सगळं. हाँ सिलेक्ट किया, ना अगेन गो बैक टू स्केच ऑप्शन, अभी कुछ भी स्केच करना है तो हमें वहां पे ही जाना पड़ेगा 2D में। हाँ, क्लिक ओवर दैट व्हाइट पेपर पेंसिल टाइप ऑप्शन, क्लिक ओवर इट। अभी देखो जो अपने सरफेस सिलेगा वही आपके सामने आ जाएगा। अगर ऐसा ऑफसेट किधर से चला गया तो ये येलो बटन पे फिट ऑल इन करना है तो सेंटर में आ जाएगा, आ गया। ओके, अभी हमें क्या, सिंपल एक रेक्टेंगल बनाना है। ओके, सिंपल एक रेक्टेंगल बनाना है, तो देखो कैसे करना है। ये सरफेस पे से भी बना सकते हैं आप, या ऊपर का सरफेस भी लेते थे और उस पर भी एक रेक्टेंगल बना के एक्सट्रूड करते थे, वो भी चलता था, और दोनों ऑप्शन ओके। तो अभी क्या करना है देखो, यू हैव टू यूज कितना है वो, 25, ओके 25 का है, ठीक है, सेंटर से 25, यू हैव टू यूज वन रेक्टेंगल कमांड इन दिस। अभी क्या करना है ध्यान दो इधर, कर्सर आपको रेक्टेंगल के पास लेके जाना है, तब वो आपको व्हाइट अपवर्ड और डाउनवर्ड एरो दिखाएगा, पास लेके जाना है, क्लिक नहीं करना है। जब वो एरो दिखेगा तब क्लिक करो, लेफ्ट क्लिक, तो इतने सारे ऑप्शन ओपन होंगे। तो इसमें से हमें ये वाला रेक्टेंगल लेना है, सेंटर रेक्टेंगल, यूज सेंटर रेक्टेंगल, क्लिक करो उसको। ओके, नाउ सेंटर में देखे आओ, यहाँ पे ये ब्लू लाइन दिखनी चाहिए, ब्लू लाइन दिख रही है। नाउ लेफ्ट क्लिक एंड क्रिएट वन रेक्टेंगल, रैंडम छोटा रेक्टेंगल बना लो और लेफ्ट क्लिक करो कुछ, हाँ लेफ्ट क्लिक करो, हाँ हो गया, छोड़ दो। हाँ, तो अभी देखो ये रेक्टेंगल बन गया है, हाँ सेंटर में आ गया है। फिर हमें इसको डायमेंशन देना पड़ेगा, कितना है 25, तो इसको डायमेंशन पे जाओ, यहाँ पे इसको क्लिक करो लाइन पे,
और डबल क्लिक करके 25 कर। क्लिक करो लेफ्ट, लेफ्ट क्लिक करो, लेफ्ट क्लिक करो ना, साइडला क्लिक कर ना कुठं. हाँ क्लिक करो, क्लिक कर, क्लिक कर, क्लिक करा ना, हाँ बा. अरे डबल क्लिक करो अभी वो रेक्टेंगल पे क्लिक करो, डबल क्लिक, रेक्टेंगल पर, रेक्टेंगल पर, रेक्टेंगल जो अभी बनाया है वो. नहीं नहीं, रेक्टेंगल जो बनाया है अभी कैंसिल करो, कैंसिल करो, कैंसिल. वो रेक्टेंगल है ना उसको, नहीं वो नहीं, वो नहीं. अरे व्हाइट कलर का जो है. हाँ डबल क्लिक, डबल क्लिक, डबल दो दो बार फास्ट. हाँ अब डायमेंशन सेंटर में आना चाहिए रेक्टेंगल, इधर उधर नहीं आना चाहिए. हाँ ठीक है ना, क्या प्रॉब्लम. ये देखो अगर कुछ एडिट करना है डबल क्लिक कर लो इसको भाई, ये मिरर एक्सटेंड करना है. हाँ, अब बनाओ. ये यहाँ पे नजदीक लेके जाना और ये वाला 2 नंबर का. बन गए. अब क्या करना है देखो, इसका डायमेंशन कितना है, कितना होगा, 45, 45 दे दो. 45, 45 दे दो. हाँ ब्लू कलर के बॉक्स पे, ब्लू कलर का बॉक्स. हाँ इसको 25 दो, उसको 45 दो. हाँ क्लिक करो. अरे वो डायमेंशन चला जा रहा है ना, वो डबल क्लिक करो ना उसको. हाँ हो गया, उधर हो गया, लेके जाओ बाहर. हाँ आया अभी. क्लिक करो, ऊपर ऊपर के इसको क्लिक करो लाइन. हाँ क्लिक करो, ऊपर लेके जाओ, क्लिक. अभी वो स्किप करो, उसमें से निकाल दो. कमांड बंद करो, कमांड बंद करो, बंद करो. उस पर क्लिक करो ना पर, फिर से क्लिक करो उस पर. हाँ अब डायमेंशन पे डबल डबल क्लिक करके 45 25 करो. डायमेंशन दो. ये मेरा एक्सटेंड दो. मालूम नहीं. ये रोटेट इथून कर किंवा माउस स्क्रोल बटन, राइट क्लिक बटन दबा के इसे रोटेट कर. स्केच में चलिए, इसको फिट करके लो अच्छे से. ये रेक्टेंगल देखो यहाँ व्हाइट पे गए ना, तो इसके अंदर ही खुलता. इस सेंटर में लेके क्लिक करके रेक्टेंगल बनाओ. हाँ डायमेंशन दो प्रॉपर, 25 और 45. अब देखो गलती क्या हो रही, डायमेंशन तो हमने बराबर दिया है. हाँ पर प्रॉब्लम क्या है, 25 45 सब बराबर, ये लाइन इसको मैच होनी चाहिए, तभी वो बराबर आएगा. ओके तो इसको मैच कैसे करना है देखो. फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट दिस लाइन, लेफ्ट क्लिक से एक सिलेक्ट करो उसको, ऑरेंज कलर जैसा हो जाएगा वो. देन यूज कंट्रोल बटन, कीबोर्ड पे कंट्रोल बटन दबा के रखना है, प्रेस करके रखो. उसके बाद ये ऊपर की जो एज है इसको सेलेक्ट करना है, लेफ्ट क्लिक से कंट्रोल बटन. सिर्फ ऊपर की एज, सिर्फ ऊपर की एज, सिर्फ ऊपर की एज. हाँ अरे पूरा बॉक्स हो रहा. साइड क्लिक करो. ये एग्जांपल, दिस इज एग्जांपल ऑफ, अगर आपको पीसी पे है आप और नंबर ऑफ पिक्चर्स है, तो आप सब सेलेक्ट करते समय क्या करते हैं, एक से कंट्रोल बटन दबाते, एक सेलेक्ट करते करते जाते हैं, तो वो सिलेक्ट हो जाते हैं. तो सेम यही वही है. आपने कंप्यूटर यूज करना चालू करो, मोबाइल सब फेंक दो, कंट्रोल बटन दबाओ, दबा के रखो. अभी ये वाला ऑप्शन मैं बताता हूँ. अभी देखो मल्टीपल सिलेक्शन जब करना है तो आपको ऐसे करना पड़ता है. हाँ कोई भी सॉफ्टवेयर, बेसिक एमएस सी आई टी का है एग्जाम्पल. तो ये देखो, ये दोनों सिलेक्ट हो गए. नाउ जहां पे डायमेंशन देते हैं ना, उसके ऊपर ही कमांड है, कंस्ट्रेंट डिफाइंड इन डायलॉग बॉक्स. क्लिक ओवर दैट, स्मॉल विंडो विल अपीयर. ओके
In that, you have to use this constraint कोइंसिडेंस. क्लिक ओवर इट कोइंसिडेंस. जैसा कोइंसिडेंस पे आप क्लिक करोगे वो एज पे जाके टच हो जाएगी. ओके. यानी हमें वो फिर से डायमेंशन देने की जरूरत नहीं पड़ती है. ऑटोमेटिक हो जाएगा. ओके. ये हो गया. नाउ एग्जिट. एग्जिट दिस. हाँ, यहाँ पे प्रोफाइल बन चुका है. अगेन यूज पैड कमांड. पैड कमांड. पैड. ओके. जैसा पैड आप यूज करोगे वो बनना चालू करेगा. पैड पैड. नीचे है पैड. येलो कलर. हाँ. अभी बनना चालू करेगा. उसका डायरेक्शन चेंज कर लो. आपका वो अंदर की तरफ जा रहा है. यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन है. रिवर्स डायरेक्शन. बाहर की तरफ आना चाहिए. ये साइड मेरा जैसा आ रहा है. देखो ये बाहर साइड आ रहा ना. तो वो रिवर्स डायरेक्शन. ये टैब पर क्लिक करो ना. रिवर्स. रिवर्स. हाँ. अब यहाँ पे 22.5 की जगह 5 mm डाल. 5 mm और सिलेक्ट ओके. हो गया. ये देखो पीछे का वो एक्सट्रूडेड पार्ट आ गया. 5 mm डालो. एक्सट्रूडेड पार्ट आ गया. कंट्रोल जेड कैंसिल करो. क्लोज करो उसको. क्लोज करो. कंट्रोल जेड. अरे वाह. कंट्रोल जेड कुछ अलग ही छोड़ रहे हैं. कंट्रोल दबाओ. दबाओ दबाओ दबाओ. 5 डालो. 5. ठीक है. अभी. हाँ. क्या है. काय मागे नाही आहे रे. इथून बाहेर पडला सर. हे झालं का? बरोबर आहे. 25 आहे काय. नाही डायमेन्शन द्यायची आहे का? हा, मग मना नाही चाललंय कारभार. ओके. ह्याची गरज नाही 25. ऍड कर दो. 5 mm दो और ओके. तर 25 आणि 45 मध्ये करायचं. हा 45 दिला नाही तरी चालेल. ते ह्याला जेव्हा टच होईल ना तर होऊन जाते. 25 हो गया. अभी लास्ट रहेगा हमारा क्या है. स्टिफनर. दिस स्टिफनर इज रिमेनिंग. ओके. तो अभी इसको क्या करना है. एक लाइन ही बनानी है सिर्फ. और लाइन से स्टिफनर सीखना है. ट्रायंगल बनाते नहीं बैठना है. ओके. एक कमांड यूज करना है जिससे आपको ये हो जाएगा. तो ये सेंटर में बराबर. ओके. इसकी थिकनेस है 9 mm. ओके. सो फॉर दिस इसको मूव करके ले लो. माउस से रोटेट करके लो प्रॉपर. मुझे ये प्लेन सिलेक्ट करना है. ये वाला ZX. फिर से जो पहला प्लेन सिलेक्ट किया था ना सेंटर वाला वो सिलेक्ट करो. ZX. ZX प्लेन सिलेक्ट करो. ये प्लेन ZX. ZX होना चाहिए. ये वाला प्लेन. ये देखो यहाँ सिलेक्ट करो. हुआ क्या सिलेक्ट. हाँ करो ना सिलेक्ट. घुमाओ ना उसको बराबर. प्रॉपर घुमाओ ना वो. ये हाथ यूज करो. हाथ ऐसा लाओ बराबर उसको. हाँ लाओ 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 लाओ. मूव करो. मूव. दूसरा दूसरा जो है पोजीशन. हाँ. खींचो उधर. खींचो खींचो खींचो. जूम करो जरा. हाँ अभी वो बराबर है क्या देख रहा हूँ. हाँ बराबर है. ओके. ZX प्लेन लिया. हाँ काय आलं. काय कॅन्सल झालं. काय एवढं कंट्रोल बटन. पॅनिक व्हायचं नव्हतं नाही.
पे ऐड कर दो, 5 mm डालो, 5 5 डालो और ओके दो। 5 डाल के ओके करो। 5 करो ना, 22 की जगह 5 दबाओ ना। हम्म। ओके। अब इसको घुमा लो और मुझे ये जेड एक्स प्लेन चाहिए। जेड एक्स प्लेन को सिलेक्ट। अरे काय तुम्ही अजून पहिल्या स्केच मध्ये अडकलाय. बदल ना आता, बरोबर आहे ना. बदल फटाफट. डबल क्लिक करायचं मला. बदल. हो गया क्या? जेड एक्स प्लेन पे क्लिक करो और गो थ्रू दिस अगेन. स्केच. स्केच पे जाओ. Go to sketch. ZX plane, select that ZX plane and go to again that paper pencil type symbol, sketch. ओके. अभी ऑब्जर्व करो कितना. हाँ, एक इसमें गलती है. एक डायमेंशन मिसिंग है. तो क्या है? देखो ये कितना आगे है ये नहीं बताया गया. सो विल टेक दिस एज अ 15 ही ले लेंगे. ये जो 15 है ना इसके रेफरेंस से. जग डिस्टेंस नहीं दिया उन्होंने, देना चाहिए था यहाँ पे. ओके. कितना आगे, क्योंकि ये एज तक नहीं गया ना. यहाँ तक गया रहता तो कुछ प्रॉब्लम, डिस्टेंस नहीं देते तो भी समझ में आता. वो दिया नहीं. तो विल टेक एज अ 15 mm. ओके. यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो गैप रहेगा वो 15 mm का गैप रहेगा. ओके. तो फॉर दिस आई हैव टू यूज सिंपल लाइन. लाइन कमांड यूज करो. लाइन कमांड लिया. रैंडमली एक लाइन बना लो, ऐसी तिरछी तिरछी लाइन बनानी है. छोटी लाइन. क्लिक करो, लेफ्ट क्लिक. वहां से करने की जरूरत नहीं. कंट्रोल जेड करो. कंट्रोल जेड. कंट्रोल जेड करो, गई नहीं हो. हाँ. फिर से लाइन लो. ऐसी तिरछी लाइन बना लो बस. कहीं से भी बनाओ ना, बीच से ऐसा. ये देखो ना इधर. बीच से किधर से भी करो. ओके ओके ओके. ये गड़बड़ है. ये वाला बंद करो तुम्हारा. ऊपर है देखो. 2 नंबर. हाँ, स्नैप पॉइंट चालू है. हाँ. अब कंट्रोल जेड करके चालू करो. फिर से बनाओ, अब आ जाएगा. वो क्या कर रहा है, स्नैप पॉइंट का मतलब ये है कि जो स्क्वायर है, ग्राफिकल स्क्वायर जो है ना, उसमें से ही काम करेगा वो तिरछी होगी ही नहीं तुम्हारे. हाँ, तो ले लो, इधर लो. बस. ओके. हो गया. अब क्या करना है देखो. ये जो लाइन का एंड है, यू हैव टू मैच विद दिस एज. ये जो एंड का जो एज पॉइंट दिख रहा है ना, इसको मैच करके लेना है. और दूसरा जो एंड है, ये वाले एज को मैच करके लेना. और उसके बाद हम डिस्टेंस देंगे 15 mm. ओके. समझ में आया? तो पहले क्या करना है देखो, ये कंट्रोल बटन से ही काम करना है दोनों भी. तो पहले ये एंड को सिलेक्ट करना है. सिर्फ वो एंड सिलेक्ट होना चाहिए. साइड में क्लिक कर लो. पहले साइड में क्लिक कर लो. कहीं भी साइड पे क्लिक करो. ऐसा ब्लैंक स्पेस पे कहीं पे क्लिक करो. हाँ. अब ये एंड पे क्लिक करो. सिर्फ वो एंड सिलेक्ट ऑरेंज होता है देखो. हो गया क्या? अब कंट्रोल बटन दबा के रखो और इसका एंड सिलेक्ट करो. कॉर्नर. तो 2 ऑरेंज डॉट्स दिखेंगे आपको. ओके. नाउ अगेन गो टू दैट सेम कमांड जो है कंस्ट्रेंट डिफाइंड इन डायलॉग बॉक्स. डायमेंशन के ऊपर वाला जो है ना कमांड, उस पर जाके क्लिक करो. कोइंसिडेंस. तो आके वो कोइंसिडेंस हो जाएगी. जहाँ डायमेंशन है ना उसके ऊपर वाला कमांड. ऊपर वाला कमांड उसका. हाँ. क्लिक करो. कोइंसिडेंस. 2 नंबर. हाँ. ओके. हाँ. सेम. ओके कर दो. सेम अभी क्या करना है देखो, ये वाला एंड. एंड बी. और ये एज कंट्रोल बटन दबा के. सेम. ये एंड और ये एज कंट्रोल बटन दबाओ और सेम कोइंसिडेंस वाला ऑप्शन यूज करो. ये एज और वो एंड. ओके. और कंट्रोल बटन दबा के रखना पड़ेगा. हाँ. आप जाओ फिर से कमांड पे हो. कमांड पे जाओ इधर के. हाँ. कोइंसिडेंस. कोइंसिडेंस फिक्स नहीं. फिक्स हटा दो. हाँ. ओके. ओके. अब क्या करना है, सिर्फ एक ही चीज रहेगी हमारे को, डिस्टेंस देने की रहेगी. तो क्या करना है, सिंपल ये जो है कांस्टेंट, इसको डबल क्लिक करो. ये एंड को क्लिक करो.
ये एंड जहाँ पे आया है वो, और ये वाले एज को क्लिक करो, ये वाले एज को क्लिक करो, इनके बीच में डायमेंशन बन जाएगा। ये एंड और ये वाला एज क्लिक करो, डायमेंशन बन रहा है, ऊपर लेके जाओ उसको, ऊपर लेके जाके क्लिक करो। हाँ, इसको 15 mm करना है, 15 mm, 15 mm। हाँ, ट्रायंगल वगैरह कुछ बनाना नहीं है, इतना ही, ओपन एंड रखना है इसको 15। ओके, हो गया, सबका हो गया काय? डबल क्लिक करा डायमेन्शनला, एंडला क्लिक करा आणि एजला, व्हर्टिकल एजला क्लिक करा, या एजला क्लिक करा, 15 mm करून. ओके, नाउ एग्जिट दिस वर्क बेंच, एग्जिट, एग्जिट कर लो। ओके, अभी वो लाइन ही बनी है, पर उसको कैसे स्टिफनर बनाएंगे देखो हम। यू हैव टू यूज दिस कमांड। यहां तक आ गए सब, एग्जिट कर लो उसको, एग्जिटेड। ओके, नाउ लुक फॉर दिस कमांड, सॉलिड कंबाइन के पास लेके जाना है, व्हाइट एरो हो जाएगा, व्हाइट एरो होने के बाद ओपन हो करो उसको, ओपन करो। उसके अंदर ये जो स्टिफनर जैसा दिख रहा है, डायरेक्ट स्टिफनर ही दिख रहा है, उसको क्लिक करना, स्टिफनर कमांड। ये देखो, ये ब्लू वाला, ब्लू और येलो बॉक्स जैसा है, उसके नजदीक लेके जाओ कर्सर, वो खुलेगा क्लिक करके। उसके बाद ये स्टिफनर वाले कमांड को क्लिक करो, जैसे क्लिक करोगे वहां पे वो बनना चालू हो जाएगा। नाउ इंस्टेड ऑफ 1 mm, बाय डिफॉल्ट है वो, उसको चेंज करो 9 mm, 9 mm, एंड सेलेक्ट ओके। ओके, इट कम दिस कंप्लीट्स योर प्रॉब्लम। अभी इसको कैसे करना है देखो, ये आइसोमेट्रिक व्यू पे क्लिक करना है, ये जो क्यूब जैसा दिख रहा है क्या, क्लिक करो उसको। जैसे आप क्लिक करोगे और ये फिट कर लो इसको, फिट जैसा अपना प्रॉब्लम है देखो, सेम वो पोजीशन में आ जाएगा, 120 डिग्री एंगल आ गए। पहले फिट करो इसको, फिट करो। हम्म, एक मिनिट। आणि त्याच्यानंतर हे आयसोमेट्रिक पर क्लिक करो, आयसोमेट्रिक ये वाला ब्लू बॉक्स क्यूब। अरे कम्प्लीट नाही झालं तुमचं, हवेत राहिले नाही, हे इथं पण जोडायचं होतं, कंट्रोल बटन होतंय नाही का? हा, ते सुटून जातं, मग हे सुटतं, मग ते सुटतं, असं खेळ होत राहतो. घे, याला 15 कर आणि बाहेर घे, स्टिफनर वापर. कॉन्टॅक्ट नाही केला, तो अंदाजी मारलाय, असं नाही तर कनेक्ट करायला लागतं. हे बघ, हे एंड घेतलं, एक करून देतो, तू दुसरं करायचा. हे बघ, हे एंड घेतलं, कंट्रोल बटन दाबलाय आणि हे एंड, हे दोन एंड झाले तुला. त्याच्यानंतर एक कन्स्टंट कमांड मध्ये जायचं, डायमेन्शन नाही, कन्स्टंट. हे झालं, ओ झाला. तसंच आता त्याला समजा तुला छोटं करून घे. हे एंड घे, कंट्रोल बटन दाब, याला सिलेक्ट कर, सॉरी या एजला आणि याला, आणि ते तिथं जाऊ कोइन्सिडंट करू, मग नंतर डायमेन्शन दे मधला. हा आहे ना स्टिफनर, डायमेन्शन किती द्यायचे? 9. नाही नाही, ते नाही, ते नाही, तसं नाही, हे झालं ना, कॅन्सल कर, डायमेन्शन असं पाहिजे, हे एंड आणि हे एज, याला बदल. एक मिनिट, एक मिनिट, काय केलं गडबड, कंट्रोल झेड करो एक बार, इसमें गड़बड़ है, ये तो बराबर है, और एक कंट्रोल झेड करो, ये ऐसे क्यों हो गए ऑफसेट, गड़बड़ है, ये तो बरोबर आहे, हा चुकलाय, हा चुकलाय, आपण एकदा करू ना.
घेतलाय ना मिडल. इथं बरोबर यायलाय असं बाहेर गेल्यावर काय तर प्रॉब्लेम झाला ना तो. हम्म. नहीं इसमें और एक कुछ तो इधर एक्सट्रूड हो गया, एक्सट्रूड एक्स्ट्रा दिखा रहा है. नशीब आहे चालू. पॅड एक्स्ट्रा झालं. ही ग्राफिकल आहे लाईन कुठून आली. ग्राफिक एरर आहे ही ग्राफिक एरर आला त्याच्यामुळे. आता परत ह्या घे आणि लाईन बनव. पण चलो अब ये हो गया.